Hello and welcome back to my channel, The First Traders, guys. And good morning, good afternoon, and good evening, good night to you wherever you are in this world. And welcome to the second chapter of this mini series of supply and demand from A to Z, from 0 to 100. Okay, this is the second chapter and one of the most important chapter, and it's all about basics, and we will slowly gain momentum. So first I will explain to you the basic price structure, okay, and then I will go to the things like QML, QMTR, fake outs, compression, etc. Other things, of course, it will be in the next chapters in the near future. So this is mostly about price structure and market structure, okay. So in case you have to know where you are going in either in an uptrend or in downtrend, okay. So it's very simple and easy. So first of all, let me explain. So if the price is, suppose the price is going up, okay, price ने एक low बनाया, ठीक है, first low, then it went up and made a high. फिर प्राइस ने एक तरह की सीलिंग है ना, छत, एक तरह की छत से टकराया, which is called resistance, okay, and फिर पुल बैक दिया नीचे की तरफ, देख सकते हैं आप. Then ये दोबारा यहाँ से ऊपर गया, तो it made a higher low, okay, and then when it broke this structure, this high, it made another higher high, okay. Then it came back again, hit a ceiling again, roof again, and then it comes down, and then it comes to the floor, which is also called support, and makes another higher low, and then it breaks the previous high, made another higher high, okay. Then it made another pullback and broke this high again, making another higher high. That is how a bullish market structure is, okay. Then what happens? Then price hits a resistance, then starts falling, okay. So it made a higher low because it hasn't broken this low yet, okay. ये वाला higher low जो अभी तक टूटा नहीं है, तो इसको higher low ही कहेंगे. Then it made a lower high and then it broke this low, okay. This higher low, price broke here, this low, okay. So that means now a lower low is formed. Price came from here to here and made a lower low. That means it is in a change in market character, also called CHOCH, okay. Then price came pull back again, came to a support and वापस pull back दिया, and then it came to the supply area and making a lower high, and then broke this lower low, making another lower low, okay. And same goes on here and here. This is the bearish market structure. This is bullish market structure and bullish market trend, and this is bearish market structure, okay. Bearish market trend. All right, I hope you get it. This is very simple, but you must know it, okay. So अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार रिवाइंड करके दोबारा देखिए इसे. And let's move on. If you know what's an uptrend, अगर आप जानते हो कि डाउन ट्रेंड क्या है, and how you are gonna trade it, अगर आपको पता लग गया कि अगर आप अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो तो आप ट्रेड लोगे, नहीं. That's not how we trade, okay. It's very important to identify if you are in a major trend or a minor trend. All right. Basically, I have an example over here. If you see, we are on the USD JPY chart, United States dollar and Japanese versus Japanese yen on the daily time frame, okay. And remember, we have a lot of time frames from 1 minute. We do not use 1 minute at all, too small for me, but we can include 5 minutes, 15, 30 minutes, 1 hour, 4 hour daily, weekly and monthly. So if you look over here, you can imagine this is a daily chart, okay. So every single candle here represents daily movement or daily market movement, हर single candle, okay. And अगर आप 15 मिनट पे देखोगे तो completely different story होगी, okay. So I will explain difference between major and minor trend, and let me show you. Suppose for example, if we are here, it is a obvious, if you see it, number one eclipse, it is a obvious downtrend, right. Bearish trend, you can also call it downtrend or drop, okay. And if you look at the number two,
over here, this is called sideways market. Okay, here the market is not sure if it wants to go down or इसे ऊपर जाना है. It is not sure. Buyers and sellers are fighting over here. Okay, so this is called a sideways market or range market, and also called base. And this is third number is obvious bullish trend. Okay, but if you look here, suppose if you look here around here, okay, so this is an uptrend, right? But here अगर आप 15 मिनट पे देखोगे, if you look at the 15-minute chart, you will see a downtrend, right? So this is why it is very important to know if you are in a major or minor uptrend or downtrend. Okay, you have to know the major trend. Okay, let's go deep into it. So if you notice here, this is exactly the same bearish trend from the previous slide. So आपको ये जानना जरूरी है that inside every major trend there are a lot of minor trends of their own. Okay, अगर आप देखेंगे जैसे कि let me show, for example, within this bearish trend, daily trend, okay, this is called a bearish daily trend, daily bearish trend. So you see यहाँ पर एक uptrend है and then a base है, एक जब indecision है market में, then drop, bearish trend. Okay, then again एक बार base आया, sideways market, then again for 2 days it was bullish market, right? Then again it gave a drop, bearish trend, right? Then again it made a base, then drop, then again it made a base, okay, where it didn't go anywhere and there was fight between buyers and sellers, and then again bearish trend means drop, and then we saw a base formation, right? And then the trend was up. See here, 1 2 3 4 5 6 7 8, for 8 days the trend was up. So अगर आप 15 मिनट पे होते और आप bearish trend की तरह ट्रेड कर रहे होते तो then for 8 days you could have hit your stop loss. So you have to know the you have to know the minor trends inside the major trend. Always you have to know. Okay, so आप कौन से time frame पे ट्रेड करेंगे, and these are the most obvious questions. So it depends on you. Okay, so अगर आपके पास काफ़ी टाइम रहता है, जैसे मैं हूँ, I always trade on the 4-hour and daily time frames, and for zone refinement मैं आधे मिनट पे 30 मिनट्स पे और 1 hour तक जाता हूँ. अगर आपके पास पूरे दिन टाइम रहता है काफ़ी, तो आप 15 मिनट 30 मिनट ट्रेड कर सकते हैं. So higher time frames आपके stop losses बड़े होंगे. So you know it all depends on what kind of trader you are. But with time, when you learn in this mini series, you will learn how to do it. Okay, how to trade with the major and minor trend. So आपको काफ़ी सारी ट्रेड्स मिलेगी अगर आप छोटे टाइम फ्रेम्स पे होंगे, और बड़े टाइम फ्रेम्स पे आपको कम ट्रेड्स मिलेगी. तो यूजुअली क्या होता है, 4-hour पे या फिर डेली पे पीपल गेट बोर्ड, राइट? सो क्या आप इसका मतलब ज़्यादा ट्रेड लेंगे? इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. Okay, so but as you have heard, mainly patience is the key in every field in this world. Even in trading, patience बहुत ज़रूरी है. So it's better to look at the higher time frames than the lower, but still people also trade the lower time frames. It's all your personal preference. So guys, please bear with me. We are gonna spend some more minutes on the chart to explain the major and minor trend. Okay, because this is going to be concrete foundation of all your trading, how you should be riding the waves. Okay, riding the trend. So अगर आप देखेंगे तो we are on the USD JPY के daily time frame पे. Okay, so you can see it is very obvious here, downtrend. As you can see here, it is a very obvious downtrend and very obvious uptrend, right? Then another downtrend and then uptrend. All right, it is very obvious. Let me change the colors so you don't get confused. All right, so what I will do now, मैं अब एक छोटा सा जैसे ये अप ट्रेंड है मान लो ये वाला, मैं इस एरिया को हाईलाइट करता हूँ. ओके, एंड देन वी विल सी इट ऑन द लोअर टाइम फ्रेम. ओके, ये डेली टाइम फ्रेम है. एंड नाउ लेट्स गो टू द आवरली चार्ट. ओके, नाउ लेट्स सी हियर, वी आर एट ऑन द आवरली चार्ट. So as you can see here, there are a lot of retracements while the price is going up. Okay, ये देखने में तो साफ अप ट्रेंड है, बट आप देखेंगे तो there are a lot of retracement the price has given, right? जो कि bearish retracements है. So you always have to know
द माइनर ट्रेंड्स विद इन द मेजर ट्रेंड, ओके। अदरवाइज अगर आपको गलत साइड पे आप ट्रेड ले सकते हैं एंड यू कैन गेट कॉट अप, आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है एंड देन अगेन प्राइस ऊपर चला गया, ओके। एंड हाउ वी आर गोना डू दिस, वी विल गो इन डेप्थ, देयर विल बी सम स्ट्रेटजीज, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखेंगे यहाँ पर प्राइस ने एक ट्रेंड लाइन, जो बेरिश ट्रेंड लाइन थी, इसे तोड़ा ऊपर की तरफ एंड प्राइस मेड अ क्वाजीमोडो लेवल, सी प्राइस ने ये वाला हाई तोड़ा, ओके, एंड प्राइस मेड अ क्वाजीमोडो लेवल विच वी विल लर्न इन द लेटर लेसन्स, ओके। सो देखिए यहाँ पर इसने प्राइस ने ट्रेंड लाइन को तोड़ा एक एंड इस हाई को तोड़ा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हाई, ओके। दिस हाई वॉज ब्रोकन एंड अ क्वाजीमोडो लेवल वॉज फॉर्म्ड हियर। सो प्राइस ने क्या किया, देखिए प्राइस वापस घूमता फिरता नीचे ही आया इधर एंड इस लेवल को मिटिगेट किया एंड देन बूम ऊपर की साइड। सो यू हैव टू नो सर्टेन थिंग्स जो कि हम सीखेंगे आगे कोर्स में, देन यू विल बी एबल टू कैच अमेजिंग ट्रेड्स, यू नो। ऐसा अगर आप देखेंगे तो ये मूवमेंट कितना है, दिस इज अराउंड 465 पिप्स मूवमेंट विच इज़ ह्यूज, यू नो। सो but always focus on the higher time frame trend, okay, and then you can switch to lower time frame and आप देख सकते हैं कि आगे आपको क्या डिसीजन लेना है मार्केट में एंटर होने के लिए, okay. So now let's talk about support and resistance. जब प्राइस सपोज कीजिए एक अप ट्रेंड में है एंड प्राइस रिबाउंड करता है, फिर रिवर्स करता है एक टॉप पे कहीं लेवल से, ओके। अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं वहाँ पे, तो प्राइस वहाँ से रिवर्स करता है तो वो कहलाता है रेजिस्टेंस, ओके। मान लो एक छत है, प्राइस ऊपर गया, उसे टकरा के वापस नीचे आ गया, ओके, जस्ट लाइक इन दिस पिक्चर बिलो। तो एंड जब प्राइस नीचे जाता है और एक सपोर्ट या फिर सपोज कीजिए एक फ्लोर है, ओके, वहाँ से सपोर्ट उठा के ऊपर की तरफ निकलता है, तो वो कहलाता है सपोर्ट, जस्ट लाइक इन दिस पिक्चर, ओके। एंड दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज वेरी सिंपल and I will tell you how to mark these, and these are very important levels, okay. So this is a quick introduction for support and resistance. Let's move on. So now let's discuss on what happens when these support and resistance levels are broken, okay. So as you see here, the price came here and rebounds back, that means यहाँ पर एक resistance बन गई, okay, and then price goes back down and then breaks this level, okay, and same thing happens here. First the price took support here, then ये price वापस नीचे आया और उसने इसे तोड़ दिया. So then what happens, okay, so अगर कोई resistance break होती है, okay, then it turns into a support. So price क्या करता है, price दोबारा यहाँ पर आएगा और goes up again, okay, and it is also called resistance becomes एंड SBR, ओके. सो ये दो चीज़ें आपको पता होनी भी बहुत ज़रूरी है अबाउट RBS एंड SBR. ऑलराइट, नाउ आई विल टेल यू हाउ टू मार्क सिग्निफिकेंट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस. लेट्स मूव अहेड. So let's look at how to mark significant support and resistance. That means significant means important support and resistance, okay. So first it is possible to mark at all time frames, okay. support और resistance आप हर time frame पे लगा सकते हैं, but higher time frame के support और resistance की ज़्यादा accuracy होती है and they are much stronger than the lower time frames, okay, like 4 hour, daily, weekly और monthly, और even 1 hour support and resistance levels are very strong. एंड आप कहीं भी लाइन लगा दो चार्ट पे, वहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी, लेकिन वी नीड सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टू यूज इन आवर स्ट्रेटेजी, ओके. एंड सेकंड इज दैट जो ट्रेंड चल रहा है आपका, इधर इट इज़ अ बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड, ओके, तो उनके एक्सट्रीम हाइज एंड लोज हमेशा मार्क करो बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, ओके. एंड थर्ड इज दैट अगर आपके पास कोई कैंडल की शेडो भी है,
ओके, मीन्स विक है, अपर विक या फिर डाउन विक, अपर शेडो डाउन शेडो, ओके। तो आप उससे मार्क करिए एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और अगर वो नहीं है, अगर कैंडल में मान लो कोई विक नहीं है, कोई शेडो नहीं है, तो उस कैंडल की ओपनिंग या फिर क्लोजिंग मार्क कीजिए डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट, ओके। अगर डाउन साइड मूवमेंट है तो ओपनिंग, एंड अप साइड मूवमेंट है तो भी ओपनिंग एंड विद क्लोजिंग। दीज आर द इम्पॉर्टेंट लेवल्स, ओके। एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट फॉर बिगिनर्स ऑलवेज यूज, अगर आप नए नए हैं ट्रेडिंग में, अगर आप नया नया ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो ऑलवेज यूज लाइन चार्ट टू मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस अकॉर्डिंगली, ओके। क्योंकि लाइन चार्ट पे बहुत ईजी रहता है एंड कैंडल्स पे बाद में स्विच करिए। एंड डोंट वरी, आई विल शो यू हाउ टू डू इट। सो लेट्स मूव ऑन। सो सपोज कीजिए, देखिए अगर आप देखेंगे तो प्राइस इज ऑल ओवर द प्लेस, ओके। एंड सपोज कीजिए हम ये नहीं देख रहे, ओके, वी जस्ट गो हियर, ओके। एंड हम रैंडमली कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन्स लगाते हैं, ओके। सी हियर एंड हियर, ओके। नाउ वी गो बैक एंड वी सी हाउ एक्यूरेट दीज आर, ओके। हमने जस्ट रैंडमली लाइन्स लगाई थी, बट स्टिल यू सी दीज आर वेरी एक्यूरेट एंड सी, राइट। बट दिस इज नॉट द वे। हम ये तरीका से, इस तरीके से सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं लगाते हैं, ओके। लेट मी शो यू हाउ इट इज़ डन। एंड आई एम ऑलरेडी अज्यूमिंग दैट आप एक बिगिनर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देखिए कैंडल्स की जगह लाइन चार्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे, ओके। सो नाउ इफ़ यू सी इट इज़ वेरी वेरी ईजी एंड इट बिकम्स वेरी क्लियर। तो हम यहाँ पर एक सबसे एक्सट्रीम हाई एंड एक्सट्रीम लो को मार्क करेंगे, राइट। एंड जहाँ पर सबसे ज़्यादा टचेज हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वहाँ पर हम लाइंस लगा देंगे, राइट। एंड जो कि बहुत ऑब्वियस एरियाज है, हमें बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। एंड वन मोर, आई विल पुट वन मोर लाइन ओवर हियर, ओके। नाउ अगर आपने ये सब लाइंस लगा लिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ से टच करके प्राइस नीचे गिरा है, यहाँ से भी टच करके नीचे गिरा है, मतलब ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ये यहाँ पर, एंड ये सपोर्ट लेवल है काफ़ी अच्छी। अब हम इस लाइन चार्ट को दोबारा से कैंडल्स में शिफ्ट कर देंगे, राइट। सो दीज आर आवर सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, ओके। दिस इज हाउ वी मार्क दीज लेवल्स, ऑलराइट। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारी सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हो सकती है, जैसे कि ये एक सपोर्ट लेवल है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक अच्छा सपोर्ट था, ओके। सो देयर इज सपोर्ट रेजिस्टेंस एवरीवेयर एंड ये हमारे काफ़ी काम आएगी, ओके। सो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हाई लो, लोअर हाई, राइट। एंड हियर इट इज़ हाई लो, ओके। एंड दीज यहाँ पर एक रिजेक्शन आया है, यहाँ से रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ पर रिजेक्शन है, एंड इधर तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ऑलराइट। बट ये एक्चुअली में सिंगल लाइंस नहीं होती है, ये इस तरह के जोन्स होते हैं, ओके। एंड वी विल नो अबाउट इट लेटर इन द कोर्स, हाउ टू मार्क दीज जोन्स, ओके। One second, this is a very nice zone and this is also a very nice zone, right. So let's move on to SSR. So let's look at significant support and resistance, SSR, and what it means, okay. So the first definition of SSR is that if it is a single candle that has a very long wick or shadow from a particular level, ओके। सो उसका क्या मतलब है कि उस कैंडल के पास बहुत बड़ी लॉन्ग विक हो या शेडो हो लेवल से, इट मीन्स दैट इट हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। द बिगर द विक और शेडो इज, द स्ट्रॉन्गर द रिजेक्शन इज, ओके। सो इफ इट इज सिंगल कैंडल एंड हैज़ अ वेरी बिग शेडो और अ विक, ओके। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट रिमेंबर, if it is a group of multiple candles, if it is not a single candle and a group of multiple candles, okay. So and but it has retested at least minimum 2 times at the almost the same price, okay, then it is also called significant support and resistance. Means कि अगर एक भी लेवल से multiple rejections मिले एटलीस्ट 2 बार और मोर देन 2 टाइम्स रिजेक्शंस मिले हैं एक ही लेवल से, ओके,
वो एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, ओके। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम एक्सट्रीम हाई हो या फिर एक्सट्रीम लो हो, ओके। वो बीच में भी अगर मल्टीपल रिजेक्शंस है किसी लेवल से, either being a wick or being multiple group of candles, then it is a significant support and resistance. Let me give you examples. So look here, for example here आप देखोगे अगर तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल कैंडल्स के रिजेक्शन है, 2 और मोर, ओके। सी यहाँ पर एक कैंडल क्लोज हुई एंड ओपन होके रिजेक्शन, दिस सी यहाँ पर एक विक रिजेक्शन है, ओके। यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीपल कैंडल रिजेक्शन, इधर आप देखेंगे, ओके। सो दैट इज अ सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, दीज आर द सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, ओके। एंड यू सी या तो सिंगल विक लॉन्ग विक की रेजिस्टेंस हो, जैसे कि आप देखेंगे इस एरिया पे विक सपोर्ट है, विक्स ने सपोर्ट उठाया है, ओके। या फिर मल्टीपल कैंडल्स का रिजेक्शंस हो, जैसे आप यहाँ देखेंगे यहाँ 2 कैंडल्स की रिजेक्शन है, यहाँ 2 कैंडल्स की रिजेक्शन है, यहाँ पर मोर देन 2 कैंडल्स की रिजेक्शन है, यहाँ पर भी मोर देन 2 कैंडल्स की रिजेक्शन है। सो दीज आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स फाइनली, ओके। सो मैंने ये काफ़ी बार समझा दिया है, आई होप आप लोगों को समझ आ चुका है कि SSR क्या होता है। एंड सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूजुअली लाइन्स नहीं होती है, यूजुअली नहीं, हमेशा ही ये लाइन्स नहीं होती है, दीज आर जोन्स, लाइक आई टोल्ड यू जस्ट अ मिनट अर्लियर, ये हमेशा जोन्स होते हैं, ओके। जोन्स लाइक दीज काइंड ऑफ जोन्स, फॉर एग्जांपल दिस एंड, ओके, एंड this kind of zones, all right, okay. Let's move on. So let's look at the usage of significant support and resistance in our trading, how we are going to use it in our trading, okay. So the first point is that as support becomes resistance, like I explained earlier, जब सपोर्ट टूटता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, जब एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट टूटता है तो सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, एंड वाइस वर्सा, अगर एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस टूटती है तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाती है, एंड दैट इज़ हाउ वी कैन गेट इनटू ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड्स, ओके। एंड second point is that it can be used and it is used as a place to determine Quasimodo levels, also known as QML, which is our role model strategy model, and for role reversal and trend reversal trades, okay. We can catch great trend reversal and trend continuation trades using Quasimodo levels, and I will explain it to you in future lessons, and it will literally change the way you trade, and in a positive way, right. And the third importance of SSR is to understand and determine fake outs to avoid big trader manipulations, okay. So there are market makers, big institutions जो कि प्राइस को एक्चुअली में मूव करते हैं, ओके, जिनके पास कैपिटल है प्राइस को बहुत बड़े तरीके से ऊपर ले जाने की, नीचे लाने की। सो दे मेक फेक आउट्स इन द प्राइस ताकि ये दूसरे ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, डिटरमाइन एंड रिकॉग्नाइज द फेक आउट्स, वी यूज सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन आवर ट्रेडिंग, एंड दैट दिस इज वेयर दिस लेसन एंड्स। आप लोग सब लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and from next video we will go more deeply into supply and demand and price action, and thank you for watching. Take care of you and yourself and your family. Thank you guys for watching. Take care. God bless you.